शो भैया, ये हो गया जी। लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स। यहाँ हैं हम 2023 में। My personal target a little bit after a little bit of thinking has been to at least, not at least, है ना, 1,000 hours. 1,000 hours if I do YouTube live, then I guess probably more or less I think I will do good in 2023 at least. Not sure about future. Again, I'm not sure about whether it will be a good target or not, but I'm quite sure that it will certainly create at least a few different things in my life for sure. इतना तो मैं कह ही सकता हूँ। उसमें हम लोग 196 यानी कि 200 घंटे के आसपास हो गए हैं। सो 1/5 वी आर डन, 20% अराउंड मोर और लेस, और 19.6%। सो ये है। सो इट्स I guess unless until we are 30-40%, we are not really we have not yet really seen what is gonna happen and things like that, so we shall move। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। अब शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। तो इसको पॉप आउट कर लिया जाए। चलिए ये बढ़िया है, गुड इनफ। नहीं भैया, अरे यार कहाँ भाग रहा है भाई। चलो इतना ही बहुत है आई गेस। सो लेट्स मूव। ठीक, तो कहाँ से शुरू करें। इंडिया। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं। स्टेट्स में दो स्टेट में तो इलेक्शन होना ही है, मतलब एक में तो हो गया है कर्नाटका में, राजस्थान में और होना है। यूपी पंजाब में हुआ है पीछे कुछ समय पहले, यूपी में भी हुआ है, रिसेंटली गुजरात में हुआ है, अभी तेलंगाना में भी होना है। ठीक है, यस, तो इतना है। हम्म, और बस, है तो आगे भी। स्टेट्स में ऑब्वियसली जेएनके का जो सिस्टम है उसकी एक अलग ही हिस्ट्री है, अभी चल रही, वहाँ की सिचुएशन अलग ही चल रही है। 2019 में बाइफरकेट कर दिया गया उसको, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज में। और अभी वहाँ पे G20 की मीटिंग्स होने वाली हैं। ठीक, तो बाकी विशल सी क्या होगा वहाँ पर। और इंडिया में एमपी भी है ऑब्वियसली, महाराष्ट्र भी है, बिहार भी है, एज फार एज आई नो। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है इस साल। ठीक है। और वेस्ट बंगाल में चुनाव हो चुके हैं। सो इलेक्शंस हैपन इन इंडिया। क्या हाल है, मेरे हाल बढ़िया है। सो इलेक्शंस हैपन, इलेक्शंस के लिए कैंडिडेट्स चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, है ना, और ईसीआई तो है ही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर स्टेट लेवल के इलेक्शन कमीशन भी हैं जो कि लोकल इलेक्शंस कराते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस कराती हैं। ठीक, ठीक है, चलो लेट्स मूव देन। व्हाट वी हैव सीन हियर इज दैट
कि इंडिया है, इंडिया में स्टेट्स हैं, और इंडिया में एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है एक सेंस में, इसकी अलग गवर्नमेंट होती है, यहाँ की अलग गवर्नमेंट होती है, इन दोनों के लिए इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, ठीक है। इनका इलेक्शन मतलब इनका अपॉइंटमेंट होता है, नॉट इलेक्शन। गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम होता है, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। और मिनिस्टर्स होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में सीएम होता है और मिनिस्टर्स होते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हम लोग ने चूज की है इंडिया ने, मतलब बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ, प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, लेजिस एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेटिव की तरफ आंसरेबल होती है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट के तीन पार्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव जो होती है वो लेजिस्लेटरी के ऊपर आंसरेबल होती है, लेजिस्लेटिव जो होती है वो क्वेश्चंस पूछती है एग्जीक्यूटिव से, और जुडिशरी जो होती है वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन करती है। इसमें इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तो है ही है। सुप्रीम के पार्ट कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर आर्टिकल 142 की, जो बहुत कम यूज़ की है सुप्रीम कोर्ट ने, करती भी कम है, करना भी चाहिए कम, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, अब गवर्नमेंट का जो पुराना फॉर्म है वो था, उसमें किंग्स हुआ करते थे, वहां पे भी पुलिस और आर्मी होती थी, टैक्स भी होता था। ऑब्वियसली ये सब जो है, किंग हो चाहे गवर्नमेंट, ये अल्टीमेटली दीज आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में फैमिली होती है, सोसाइटी में क्लास भी आती है, चाहे स्टेटस वी कैन से, पोजीशन, पावर, मनी, थिंग्स लाइक दैट, ठीक। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि सोसाइटी और गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप है। गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स आ जाती है, गवर्नमेंट और सोसाइटी, सोसाइटी एंड गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो है ही है। आपकी गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी? पता नहीं मैडम। हम्म, आपका मन हो तो चाहे आप इस डिस्कशन में ज्वाइन इन कर सकती है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए, एटलीस्ट, ठीक है। सोसाइटी में ऑब्वियसली मेल फीमेल दोनों होते हैं। सोसाइटी धरती पे रह रही है, धरती के चार पार्ट तो कम से कम है ही है एक सेंस में, ये लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, और फिर इसके बाहर है स्पेस, ठीक है। मैडम पेड है, बताओ तुम्हें, अगर इफ यू वांट पेड देन आई कैन डू इट, है ना। तो बेसिकली ऐसा है कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स में सोलर सिस्टम है, बीच में गैलेक्सी वगैरह आती है, इसमें स्पेस है और मैटर है,
उसके अंदर फिर सन है, सन के अराउंड प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट है अर्थ। अर्थ के अंदर जो है फिर सोसाइटी है होमोसेपियंस की, और बाकी इन्वायरमेंट भी है उनका। That is how you uh, look at things and world when you are looking from a center. When you keep yourself at a center, and especially मतलब Homo sapiens first as a center. एक मिनट मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब ये फ्रीडम वालों का जोन है, बट आई एम ओके, मुझे पता है बहुत बदलाव आएंगे नहीं। ये होमो सेपियंस है। होमो सेपियंस में ये एक तुम हो, मान लो जो बहुत सेंटर में है, यूएसए का लो, ठीक है, उसमें उनका प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के सेंटर के अंदर भी उसका एक ईगो, फिर उसको इस तरीके से चीजें दिखाई देती हैं बाहर की तरफ जाते हुए, है ना। जरूरी नहीं है कि ये जो सेंटर हो वो ब्रह्मांड का भी सेंटर हो। जस्ट इन केस अगर ब्रह्मांड ऐसा है तो ब्रह्मांड का केंद्र बैक टू इट। कब छूटूंगा मैं इससे। ठीक है, ठीक है मैडम, आपकी जैसी इच्छा मेरी भी वैसी इच्छा, बाकी हम लोग देखेंगे। हम्म। वैसे भी आप सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करना तो आता ही है बहुत अच्छे से, तो आपकी भी जैसी इच्छा है मैडम, क्या किया जा सकता है। लेट्स मूव। तो ये हो गया, है ना। और हम लोग क्या करने वाले हैं। यस, तो हमने ये देख ही लिया है कि एटलीस्ट द वे थिंग्स आर अरेंज राइट नाउ इज लाइक दिस। उसमें यूएसए बहुत सेंटर में है। द प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट ह्यूमन ग्लोबल सोसाइटी जो चल रही है उसके सेंटर में यूएसए है लार्जली। यूएसए है, यूएसए की कंपनीज हैं, यूएसए का कल्चर है, यूएसए का टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, जिसमें गूगल, फेसबुक, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और इस तरह की चीजें, आईबीएम, थिंग्स लाइक दैट। ठीक, ये सब आता ही है। हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है इसका मतलब कि टेक्नोलॉजी इज इन टेक्नोलॉजी हैज स्लोली became or will most likely become the center of human existence as well और human society as well। तो ऐसे में हमें टेक्नोलॉजी की बात करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी, when you talk about technology, but again टेक्नोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी के सेंटर में है ना। तो इट जब जो सेंटर में है वो उससे बड़ा नहीं हो सकता ना, बड़ी तो ह्यूमन सोसाइटी रहेगी। तो ये भले कितनी भी छोटी दिखने लगे, बट यू विल नीड टू हैव अ सर्टेन सेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, है ना। और इसमें दो चीजें तो हैं ही कम से कम, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स। चाहे पॉलिटी जिसको जो भी कह लो तुम, है ना। इसमें मार्केट्स आते हैं और इसमें पॉलिटिकल पावर आती है, यानी कि रूल्स बनाने की पावर, जिसमें कि मार्केट के बारे में रूल बनाना भी शामिल होता है। आज क्या बता रहे हो सर। मैं ये बता रहा हूँ कि लाइफ में टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है। सोसाइटी में टेक्नोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें हो सकता है मैं थोड़ा मोड़ा ये भी बताऊं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का क्या पेनिट्रेशन है। जो स्मार्टफोन तुम यूज़ कर रही हो देखने के लिए, चाहे जो इंटरनेट वगैरह है ना, वो टेक्नोलॉजी की पार्ट है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फिर स्मार्टफोन और इंटरनेट हमारे पास थोड़ा होता। तो उस सेंस में कोई भी सोसाइटी ऐसी एक सोसाइटी है, तो इधर इट इज़ ए टेक्नोलॉजी इम्पोर्टर सोसाइटी, बाद में एक नेशन बन जाती है लार्जली, है ना। जैसे कि इंडिया एक नेशन है, यूएसए भी एक नेशन है। इंडिया, यूएसए, जापान, चाइना, जर्मनी। जर्मनी की वोक्सवैगन बड़ी फेमस है, कानपुर में शोरूम है इसका, वोक्सवैगन करके।
हिंदी में पता नहीं क्या ट्रांसलेट किया है वैसा, पर जो भी है। टेक्नोलॉजी इम्पोर्टर हो सकती है, या फिर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्टर हो सकती है ना। या फिर कुछ टेक्नोलॉजी हो सकता है कि एक्सपोर्ट करे, कुछ टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करे। टेक्नोलॉजी के पीछे साइंस होती है, साइंस के पीछे मैथ होती है, बट साइंस मैथ टेक्नोलॉजी ये सब होते सोसाइटी के अंदर है ना। ठीक है, तो इस तरीके से बना कुछ कि ये रही सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो चीजें तो रहेंगी, मार्केट्स एंड रूल्स, है ना। और इसमें फिर तीन चीजें, टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथ्स। ठीक है, मार्केट्स एंड रूल्स के अराउंड ही तुम्हारी लिटरेचर बनता है, चाहे कहानियां बनती हैं, समवेयर उसी के इंटरेक्शन से बनती हैं, है ना। इसमें तुम्हारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। ठीक, और फिर टेक्नोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट तो कंप्यूटर है ही है, नो डाउट अबाउट दैट। तो वही फिर हमारे मोरल से स्कूल एजुकेशन दिखती है हमें, है ना। स्कूल एजुकेशन एमएचआरडी के अंदर आती है, और ये दोनों लेवल पे आती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। ठीक है, इसमें प्राइमरी स्कूल होते हैं, हायर सेकेंडरी होते हैं, और इवन फिर कॉलेजेस, पीएचडी तक का आता है, इतना सिस्टम आता है और क्या। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसेंशली व्हाट वी आर सीइंग कि सोसाइटी है, सोसाइटी में गवर्नमेंट है, और सोसाइटी को एजुकेशन की नीड भी है। सोसाइटी को टेक्नोलॉजी भी चाहिए, सोसाइटी को गवर्नमेंट भी चाहिए ही ऑब्वियसली, सोसाइटी को सिक्योरिटी भी चाहिए, उसके लिए पुलिस और आर्मी बनाती है। आर्मी कह लो चाहे डिफेंस कह लो, बात तो बरस बराबर ही है। अभी तीन पार्ट में हो गई, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक, और में जोड़ सकते हो, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए एनडीआरएफ वगैरह है तुम्हारे पास, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। अभी टर्की में हुआ था अर्थक्वेक, है ना। तो नेचुरल डिजास्टर की बात आ जाएगी। सिक्योरिटी का जो सेंस है भैया, वो तो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क। सिक्योरिटी में तुम्हारी पुलिस भी आती है, डिफेंस भी आता है ना। पुलिस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आता है बेसिकली, डिफेंस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आएगी। ठीक है, इसमें तुम्हारा मनी लॉन्ड्रिंग भी आता है, इसमें तुम्हारा असम राइफल्स ये सब भी आती है। ये तो भाई वैसे भी एमएचए के अंदर आता है, एंड रिजर्व फोर्स बोलते हैं इसको, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। ठीक है। हम्म, अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन दोनों का बजट भी आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बजट होता है, वी कैन टॉक अराउंड बजट। बजट में ऑब्वियसली टैक्स आता ही है, इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। घूमिंग, वी आर घूमिंग अ लॉट, बट इट्स ओके। ठीक, घूमना तो काम है जीवन का। चलो भैया, कितना समय हुआ मुझे, 20 मिनट, इट्स ओके। ठीक है, चलेगा। ठीक है, सो बजट होता है, बजट दोनों लोग पेश करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी।
दोनों लोग टैक्स भी लेते हैं। टैक्स में ही एक नया जो टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है वो है जीएसटी। टैक्स शेयरिंग के लिए एक फाइनेंस कमीशन बनाया हुआ है जो बताता है कि कितना टैक्स होना चाहिए, कितना नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह, कैसे कहाँ टैक्स लिया जाए, थिंग्स लाइक दैट, कैसे शेयर किया जाए। ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन, जीएसटी। ठीक। और टैक्स में इनकम टैक्स होता ही है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है। ये कंपनियों पे लगाया जाता है। यस मैडम, हाउ आर यू? व्हाट डू यू वांट? बताइए मलाइका जी। ओके, लेट्स मूव देन। गिव मी अ मिनट, मेरा फोन वो एक जगह कहाँ गया? माय फोन इज वेयर हियर। यस 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 यस। चलो भैया, अब सब will I be financially successful in the next few months? You want to have a discussion around it or a tarot reading or what? ये बताइए, what do you want? If you want to have a discussion around it, I can have it as well. Tarot, so tarot तो paid है. Tarot is paid here. कम से कम, at least today. है ना? Tarot, I am thinking of making it paid only. Hmm. I'm waiting. I'm okay. Just a minute. Let me try something new. I will do tarot only, no, but just trying to do whether I can do something new here. What's that? Okay. So.
Will I be financially successful in the next few months? So, King of Wands, Eight of Cups, Page of Pentacles, and the Three of Pentacles. Four cards are there, right? Let's talk around it. So, there is Page of Pentacles and Three of Pentacles, Eight of Cups, and the King of Wands. Okay, so uh, financially successful. I think it will depend a lot upon. See, there are two cards there certainly there, which shows that you might be successful. This is Page of Pentacles and Three of Pentacles. It means that somehow you are certainly interested. Nah, you're interested in doing something, maybe a project or so. So one energy is certainly there, one positive energy is certainly there that you're feeling drawn towards doing something, correct? But this Eight of Cups and the King of Wands, maybe that you are emotionally not feeling that much, uh, very much connected to someone. Your feeling of not being you feeling not connected with someone somehow creates a hole in your life. Okay, and then the very energy that you are having here, which you can put up in making yourself more financially successful, it starts getting drained into this hole. And that is where you start somehow feeling confused, not being able to take long term decisions and things like that. So I would say that there are 50-50 chances here. If somehow you can manage this hole better, then I guess probably you can uh, do better. Otherwise, it will be a little harsh for you or hard for you to be financially successful. So that is your reading. Yep, that's that. You liked it in this way? Yep. Yes, so let's move then. You liked it. So, do you want to talk about this whole? We can talk about this whole as well. And it's optional. I mean, you can donate for it or you can also not donate for it as well. But we can talk around this whole and this financial success in case you want. If you liked what we discuss, you can donate whatever you want or you can also not donate as well. How about that? Ding, 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 ding. Not having any response from your side, to be honest, but it's okay. I don't know how is Jason feelings about this.
No communication between us right now. Okay, let's see. Hmm. So, how's Jason's feelings about this? No, no communication between us right now. Jason. Lover, seven of wands, five of wands, and the eight of pentacles. So you've got lovers and seven of wands, and and we have got five of wands and the eight of pentacles. You can also take now screenshots as well. No more you'll have to ask me the cards. So see, seven of wands, five of wands, it's very clearly is that he is actively trying to stay away from you. Obviously, naturally, it can you can see that he is still not over. He is still not over from the hurt, and he's still not ready to have a communication interaction or deep merger or anything like that, because he probably is still not over from whatever may have happened between you, two fights and things like that. Lovers means that he is still somehow trying to distract himself, and trying to indulge, not indulge, but trying to be part of more stories. Somehow he's, you can say that trying to deliberately avoid commitment. And when you are not committing to someone, you are not listening to someone more, then what happens is that your energy becomes scattered. You talk to more people, you look at more people, but you are not going very deep with them. So that is what is still present. That's what lovers is all about, Gemini energy. Eight of Pentacles, but when this becomes too much of a range, too many things, too many people, too many stories, then to have a certain amount of depth, he starts focusing on his work side. So I guess slowly he is learning the fact that he need to gain depth from his work life, and the very same you must also do, I think, here, as I was saying. Like if you will try to go in the same way as he is trying to do, and are trying to fill that hole by getting into too many people, then chances are that you will not be able to focus on here as well, and on your projects, on your own financial stability. So essentially, what is happening here is, I guess, it's like this. Like if you are here, this is fashion and this is Jason, and both of them have got some sort of emotional hole. No, neither you nor he is having any very deep emotional connection. But at the same time, what he is doing is that he is trying to figure out or live his life in this way. Work wise, he is trying to give a lot of time to just one thing, and emotionally, he is trying to immerse himself with many stories, many people. Correct? Many. But not committing to any other person. How you are trying to deal with it is that you are somehow like this. Probably in your financial life, you are maybe at least two to three projects at least, or probably not being able to give enough attention. And love wise, I guess you are with less people at least, maybe three, four, five at max. Okay. What needs to be done is that probably you need to just focus on a few, one or two only, and use this energy to focus on your work. That's how I think you should be doing. In future, what might happen, I guess, is that this will become less as well on his side, as he will focus more on his work. This will become also maybe three or four, and then you will have a chance of penetrating into his life back again. I think this is what is going to happen.
But especially for this to happen, it is very much important that you focus your energy here more than here less. It has to be less here and more here. Okay, and the same way here for the Jason as well. More here, as he will give more energy here, automatically this will be decreased. And then ultimately he will have to choose that with whom he want to stay in the long term. He can't sustain like this for the long term. And that is where you will get your moment of penetration. Until then you will have to focus energy here. Getting? Getting or not? Anything else you want to ask? You understand? Yes. Now moving from here, we can do two things. Or you can do two things. You can ask for another tarot question, or you can get into this discussion more. Or also obviously do nothing at all. Your choices. I am open for both the things, but I'm drawn more towards this kind of discussion, but still, again, up to you. Give me one free answer now, please. Please check, does Jason want to reconcile with me? Okay, does Jason want to reconcile with me? Air of Wands, Four of Pentacles, Six of Pentacles, and the Hermit. I think he wants to. Okay. Air of Wands and the Air of Wands and the Four of Pentacles, Hermit and the Six of Pentacles. It seems like that he does want a reunion. Four of Pentacles and the Six of Pentacles obviously shows that. But somehow he feels that you both are quite distant emotionally. He doesn't. He can be emotional towards you in his own heart, but he feels like that your emotions or you live too far emotionally from him that he can reach there and contact you emotionally. Not I'm not talking about physical distance. I'm talking about emotionally you both are living too far apart. So maybe again I guess the chances could be that when he starts feeling that he will need a partner for himself like this, then chances are the first person that he will try to communicate will most likely be you. And but for that he will have to be single obviously and not with someone else. It is a too risky choice to take personally, I feel. And again, it's up to you. I personally don't feel like that he's gonna be emotionally available very soon, maybe not for months at least. If that is the case. Okay. Yep.
Now that we have some time. तो हम लोग क्या करेंगे जी? We shall move, obviously. Bye, bye. 1, 2, and 3. Yes. Income tax, corporate tax, finance commission and GST. ठीक है जी. 40 मिनट हो गए, है ना? Let's move then. So as far as the tax is concerned, there is a tax to GDP ratio, correct? Then there is fiscal deficit. There is obviously trade deficit. There is GDP. There is public debt. To GDP ratio. And then we also have inflation and growth. Correct. We also have got economic concentration or economic inequality. Inequality. Correct. So these things are certainly there. Okay. So now let's talk around it. Let's talk about the GDP then. Hmm. There is GDP, and GDP obviously has two ratio: tax to GDP ratio, public debt. This we obviously want to decrease. GDP involves investment, and madam, it's paid. If you want to have a paid one, we can have it. No, no, it's not free reading. फ्री रीडिंग नहीं हो रही है. ठीक है जी. जीडीपी में इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट तीन तरह से तो होता ही है: एफडीआई, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहे गवर्नमेंट का. पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लेती है, ऑब्वियसली वेलफेयर के लिए भी लेती है, और फिर टैक्स को इन्वेस्ट करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में, है ना? पीएम गति शक्ति लॉन्च किया ही गया है. ठीक है, जिसमें कि लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को कम करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो फिर उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको बीच में लॉजिस्टिक्स चाहिए ही चाहिए. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. सो जीडीपी है. जीडीपी के बहुत सारे सेक्टर्स से आती है. जीडीपी सेक्टर्स में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को टारगेट कर रहा है हिस्टोरिकली. हाँ, थोड़ा सा मैं फ्री टैरो करना नहीं चाह रहा हूँ, तो पेड अगर आप करना चाहिए तो वी कैन डू पेड. इफ यू वांट टू डू अ पेड डिस्कशन, आई कैन डिस्कस योर लाइफ आल्सो पेड, or otherwise you can have this free study, or you want to join in this discussion that is free. ठीक है, तो ये हो सकता है. मैन्युफैक्चरिंग जो भी करेंगे तो उसको ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स चाहिए होती है ना? बाहर जाएगा देश से तो भी, चाहे देश के अंदर रहेगा तो भी, है ना? तो उसके लिए आपके पास क्या क्या है? रेल है, रोड है,
शिपिंग शिपिंग के लिए ऑब्वियसली आपको फ्री इंडो पैसिफिक चाहिए होगा, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड वहीं से पास होता है। इसके लिए इंडिया ने क्वाड बनाया है। इंडिया ने क्या बनाया है, क्वाड में है थोड़ा सा वेस्टर्न एशिया को मिडिल ईस्ट वगैरह से निपटने के लिए आई टू यू टू बना है। और इंडो पैसिफिक के लिए तो बहुत सारा काम कम चल रहा है, मतलब क्या ही क्या है। ठीक। मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ही है। Just need donation one more time. Do you see romantic love coming in my life in the next few months? Okay, let's see then. Shoo 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 shoo. Yes. Ding 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 ding. And do you see romantic love coming in my life in the next few months? Seven of Swords, King of Swords, Queen of Wands, and the Fool. Madam. So the cards. This is Mission Destination, and the cards are Seven of Swords, Fool, Queen of Wands, and the Knight of Swords. Okay, so these four are there. So I think see, I think it's a tricky situation, to be honest. It appears as if that Seven of Swords and the King Knight of Swords. This is Knight, right? Seven of Swords and the Knight of Swords means somehow that probably you are not being very honest. Not being very honest. Neither to yourself. Uh, I don't think that neither you are being very honest with yourself, not with your partners. I mean, you're not really expressing what your desires are, what your complaints are, and somehow, night, it is night. Hmm. It seems like that you are neither being very honest nor being neither being very honest to yourself about your desires and demands nor being very honest with your partners as well. In the process, ultimately what you do or what you have to do forcefully is that leave the connections abruptly. You are not trusting your partner in the first place, that he will understand you. Okay. So one thing is this thing is wrong. But it appears as if that most likely in the coming few months, the Fool and the Queen of Wands, it shows that chances are that you are going to be bold. You are going to express your desires very clearly and also demand them to be fulfilled as well. In the process, at least if conflict happens, then what will not happen is that you will not feel like that you have not been very honest. The ones whom you will say no, chances are that they will be said no forever. है ना? So at least there will be a certain movement in your life. You're not gonna accept those same individuals
on the conditions on which you have said no to them. Your desires matter ultimately, or there will be a moderation of your own desires later. It seems that more or less that you are going to be more honest, more bold, more expressive, and a little bit less compromising as well in your life. In this process, most likely you are going to attract more honest individuals. Previously you have not been with individuals who have been very much open and honest about their desires and their conflicts and things like that. So it appears as if that as an individual, you are moving towards being a more honest person, being a more bold and courageous kind of person, and in the same way, you will attract the same kind of person as well. Okay. So, do you see romantic love coming in my life in the next few months? I think yes, but the real question is that whether it will be sustained or not, or that what you should be doing once it starts happening in your life. Okay, so these two, three questions are there, but I think that if you will become honest, if you'll become more honest in your life, then chances of this happening in your life is certainly high. That's what I can say. Hmm. And again, that will depend upon you first spending more time where it was. This is where it was, na? You spending more time on your work first and not really trying to find too many partners. Someone will obviously come towards you, but when they're gonna come towards you, chances are you should be found working on some good projects in a good way, and that's how they will be more likely attracted towards you. And then you should communicate to them that you're not gonna there are certain demands from your side. You can't compromise on your work too much and things like that. That doesn't mean that you don't allow them to love and things like that, but it's like that there are a few standards on which there is no compromise at all, a few values of yours which are non-compromising, and that can only happen when you do not allow the hole that you are feeling in your life right now, probably, which I said here, I guess. Yes, this whole thing. है ना? It can only happen when you really manage your emotional hole better, है ना? And not allow your emotional disturbances to disrupt your career or financial stability or your work or whatever projects you are doing. That is how ultimately you will become bold about your demands and desires, because you will realize that once you become soft on those desires and demands, it ultimately in the long term affects your financial stability as well as your emotional stability. So it's rather better to be courageous in the first place than to be regretful a lot more later. And so I guess that is where some things needs to be changed here. Hopefully you got it or not. It's all about really managing that whole better ultimately, for the moment at least. इतना मतलब हमको अरे भाई 11 विकेट गिरने वाला है. Yes. Hmm. Now, anything else you want to ask?
That's enough. Okay, let's move then. Show where we were. Yes, here it is. GDP has got sectors, manufacturing, and it involves free Indo-Pacific, and obviously it involves the market access as well. For that, India has done a lot of FTA. So essentially, what you can see that what India is actually trying to do is it is trying to take manufacturing space of global GDP. Correct? It has been largely dominated by China, and countries are actually trying to diversify from China. That is China plus one. That is their policy, especially of G7, and you can say European Union as well. Correct? So essentially, USA and Europe. For that, USA has got issues with China, and then the bone of contentions between these two is Taiwan. Correct? Taiwan is obviously a part of Indo-Pacific in one sense or the another. China has got then North Korea and South Korea, and then these to become also Russia and Japan. And then we have got obviously Iran, Pakistan, Afghanistan, things like that. Essentially, it will become geopolitics then. You see how it is happening? So, Russia, China, Iran, South Africa, Brazil, Myanmar, North Korea, and then we have the G7. Canada, France, Germany, Italy, UK, US, and one more it has to be UK, US, Germany, France, Canada, Italy, European Union, maybe, sure. कल भी मैं फंस गया था यहीं पे. खैर इसमें इन्होंने रशिया को लिया था. ये तो G8 हो गया था. But after the Crimea in 2014 it has collapsed. रसिया में पीछे सोवियत डिसोल्यूशन हुआ. उसके पहले इन्होंने स्पेस और डिफेंस डिसेंट ग्रोथ की है. ठीक है, बहुत हद तक रशिया जो है वो इंडिया का दोस्त रहा ही है, अभी भी है ही एक सेंस में, आगे भी रहेगा मोरलेस. ठीक है, एक मिनट. हम्म. चलो भैया, तो जरा सा बात कर ली जाए अभी. जियो पॉलिटिक्स तो है ही है.
जियो पॉलिटिक्स की बात होगी तो उसमें आईआर आएगा ही आएगा। और जियो पॉलिटिक्स की बात करोगे तो आप नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात होगी। नेशनल पॉलिटिक्स की बात करोगे तो कॉन्टिनेंटल पॉलिटिक्स की, कि एशिया में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है ना, थिंग्स लाइक दैट, यूएस में क्या हो रहा है, थिंग्स लाइक दैट। इसमें भी फिर यही हो जाता है कि लेफ्ट राइट और सेंटर कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कि इसेंशली इसी तीन तरह की पार्टीज होती हैं, इन वन वे और दी अनदर। ठीक है, जो कि इलेक्शन से डिटरमाइन होती हैं। इलेक्शंस बहुत जगह होते हैं। इलेक्शंस के साथ साथ प्रेस इन्वॉल्व होती है। आईआर में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वॉर्स होती है। फिर आईआर में आपको डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड, स्टोर्ड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव देन। और हम क्या बात करेंगे, 1 मिनट, 1 घंटा हो गया जी, यस, दैट्स गुड। नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करोगे अगर तुम, तो चाइना में अभी सी जिनपिंग का थर्ड टर्म शुरू हो गया है। इंडिया में मोदी जी का थर्ड टर्म लाइकली है काफी, चाहे मोदी जी के बीजेपी के 2 टर्म तो हो ही गए। यूएस की बात करोगे तो यूएस में ओबामा, फिर ट्रम्प, और अभी बाइडेन। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिकन्स फिर इस बार जीत सकते हैं चुनाव। ठीक है, अगेन 50-50 जैसा कि इंडिया में भी है अभी, और वैसा ही मोरलेस केस यूएसए में भी है। इतना तो लग ही रहा है कि क्योंकि चाइना का थर्ड टर्म तो है ही, और थर्ड के तो चांसेस है कि फोर्थ टर्म भी हो जाएगा, है ना। और रशिया का भी तो मोरलेस यही सीन रहता है ना। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, बट वहाँ पे पुतिन जी है। ठीक है, फ्रांस में मैक्रोन 2 बार जीत चुका है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। पीछे इलेक्शंस हुए थे अभी फ्रांस में, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल कुछ तो हुआ था वहाँ पे। यार उतना याद नहीं। यूके में तो बहुत अलग स्थिति चल रही है। जापान में अभी शिंजो अबे जी मारे गए थे पिछली बार, पिछले साल ही, है ना, शूट आउट वगैरह में। तो ये सीन लग रहा है। चांसेस आर लेकिन ऐसे लग रहे हैं कि मोदी जी का भी थर्ड टर्म आएगा। यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि रिपब्लिकन पार्टी कोई कैंडिडेट आ सकता है यूएस में भी। ठीक है, तो फिर इन दोनों मिलके जो है चाइना से और निपटा जाएगा। ठीक है, टर्की में भी इलेक्शंस हुए तो वहाँ पे एर्डोगन जी जीत गए हैं। तो इस तरीके से इलेक्शंस होते रहते हैं, है ना। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग इलेक्शंस को फॉलो करते रहेंगे, स्पेशली नेशनल इलेक्शंस, जिसमें कि यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक है, जर्मनी ऑब्वियसली, वहाँ पे भी चेंज हुआ है एंजेला मर्कल से। और थोड़ा सा हम लोग स्टेट लेवल का इंडिया के अंदर, इतना तो हम लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो आई गेस नाउ आई विल टेक सम ब्रेक। 1 घंटा हो गया है, बहुत है मेरे लिए अभी के लिए कम से कम। और हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं आज का, कि वी विल फॉलो इलेक्शंस
क्वाइट इनफ। ठीक। पॉलिटिक्स से हम लोग बहुत दूर जाने वाले नहीं है यहाँ पे, एज फार एज दिस लाइफ इज कंसर्न्ड। ठीक। चलिए बाय।